types of farming systems: small scale subsistence farming and cash crop farming, which is related to the growing of crops. In small scale subsistence farming, food and raw material is produced only for the family of a farmer, because with a small scale farmer we will be having low capital investment. It means if the size of the farm of a small scale farmer is smaller, so it will give you low production. और ये प्रोडक्शन सिर्फ इतनी होगी कि इट कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फार्मर या फिर जो लोग वहां पर काम करते हैं. इन सबसिस्टेंस फार्मिंग, विच इज स्मॉल स्केल फार्मिंग, there are no extra profits of the crop. Crop is grown mainly for the use of farmer's family only. No profits are expected over here, and if someone earns any profit, तो उसको as a bonus consider किया जाता है, because वो expect तो नहीं कर रहा होता, उसको तो पता होता है ये कि मैं सिर्फ उतनी crop grow कर रहा हूं जो कि मेरी अपनी जरूरतों को पूरा करेगी. अपनी जरूरतें सिर्फ खाने पीने की जरूरत नहीं, लाइक एक फार्मर की सारी जरूरतें है ना. तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में वो क्या करता है, ही कीप्स द फूड, जो भी होगी, व्हीट है, राइस है, जो भी ग्रेन है, ही कीप्स इट फॉर हिज ओन यूज फॉर द होल ईयर, और बाकी जो थोड़ी बहुत है उसको सेल करके अपने घर की जरूरतें पूरी करता है. इसके अलावा ही डज नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट. तो स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, साइज ऑफ द फार्म स्मॉल होता है, आपके पास लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि आपकी इनकम लो है, आपके फार्म का साइज स्मॉल है तो आपका आउटपुट भी लो होगा. ठीक है. फर्दर आप इसके अंदर केमिकल स्प्रेस को यूज नहीं कर सकते बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट. ठीक है. यू यूज animal dung to fertilize your farm. You cannot afford chemical fertilizers. You cannot afford machinery into that. आप high yielding varieties नहीं उसमें इस्तेमाल कर सकते. So small scale subsistence farming is that farming in which farmer grow crops only for his and his family's use. No extra profits are expected. और small scale subsistence farming के जो processes हैं, they are different with that of large scale farming, because large scale farming में farm का size बड़ा होता है. ठीक है. farmer afford कर सकता है machinery. If we look into the inputs of small scale subsistence farming, same conditions which are required for large scale farming. Land is required, soil is required, suitable climatic conditions are required. Then the difference is created, वो होता है सिर्फ किस वजह से, human factors की वजह से. In small scale subsistence farming, natural manure is used to fertilize the farm, but as compared to subsistence farming, जब हम large scale farming की बात करते हैं तो in that chemical fertilizers are used. So chemical fertilizers are used in large scale farming, और small scale farming में क्या होगा, natural manure is used. Then next factor जो है इसमें, that is irrigation. In small scale subsistence farming, only through rain, wells and any other subsistence methods of irrigation are used. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें with large scale farming, तो large scale farming में आपके ट्यूबवेल्स, canals, modern methods of irrigation are being used over here to bridge up the gap of rainfall. फिर उसके बाद लेबर,
In large scale farms, hired labor force is used. But in small scale subsistence farming, only family members of a farm are engaged in work. In small scale subsistence farming, inherited knowledge is used. But in large scale farming, now farmers are educated with all modern techniques to know the proper application of all chemicals such as fertilizers, such as pesticides, insecticides and all chemical sprays. Then in small scale subsistence farming, desi and local varieties of seeds are used. As compared to small scale subsistence farming, in large scale farms, high yielding varieties of seeds are used. अब high yielding varieties of seeds जो होती हैं, they are resistant to pest attacks, they are resistant to diseases, they are resistant to climatic events. That's why they give us more production. Further, अगर हम इस point को देखें, तो traditional methods of plowing, harvesting, weeding, threshing, they are used in small scale subsistence farming. But on the other hand, if we talk about large scale farming, तो उसके अंदर machinery would be used. Machinery इस्तेमाल होगी for all the processes such as plowing with the help of tractors, harvesting with the help of combine harvesters, threshing with the help of thresher machines. It means that small scale subsistence farming जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से होती है, फार्म का साइज स्मॉल होता है, मशीनरी यूज नहीं होती उसमें, ठीक है, नेचुरल मैन्योर इज यूज्ड, एनिमल पावर इज यूज्ड टू ड्राफ्ट द पावर, टू प्लॉ द लैंड एंड टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, टू ट्रांसपोर्ट आउटपुट फ्रॉम द फार्म टुवर्ड्स market. In this way, we can see that small scale farming, it produces low amount of crop yield, and large scale farming, it gives us more production, adding towards the more productivity of Pakistan, leading towards an efficient way to manage food security in Pakistan. Small scale subsistence farming, it only fulfill the requirements of a farmer's family. Large scale farming में फार्म का साइज बड़ा होता है, मशीनरी यूज हो सकती है, एवरीथिंग, एवरी मॉडर्न मेथड इज अफोर्डेबल, दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है और हमें आउटपुट भी ज्यादा मिलता है.